हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर रॉकिंग एज ऑलवेज। आप सब लोगों ने मुझे काफ़ी मिस भी किया होगा बिकॉज आई कुडंट अपलोड एनी ऑफ द एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट वाइब्रेंट श्रुति. Actually, I was a little occupied. I'm sorry I couldn't dedicate and devote my little time on this podcast as well. Actually, थोड़े से auditions दे रही थी. As you guys know that I was just, I am doing voice over jobs as well. तो उसी के कुछ एक auditions थे, इसीलिए it was little hectic for me and I couldn't upload my episode on time. Well, never mind. I'm back again with another episode of Vibrant Shruti. I'm sure this will be as vibrant as you always expect. So, आप सब लोग कैसे हैं? I'm sure बहुत अच्छे होंगे. कैसी रही दिवाली? दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सब लोगों ने इकट्ठे मनाए. अच्छा अच्छा खाना खाया. We enjoyed, celebrated all the festivals. तो अभी थोड़ा सा सब लोग एग्जॉस्टेड हो गए होंगे एंड आई एम श्योर रेस्टिंग मोड पे ही होंगे. सो anyways, thank you so much guys for such a great response on my last episode, and it makes me feel so good and proud, that I'm able to address issues that are never spoken about before. The amount of you who related to me is crazy, like always getting messages and comments on WhatsApp also, and it's overwhelming. ऐसा लगता है कि आप सब लोग उस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, and that's why I really welcome all the suggestions and comments instead of just feeling bad that I had put a lot of efforts and still people are complaining or commenting. उनको क्या पता मेरे कितने efforts लगे हैं. But instead of that, I think it's so good to hear that people have actually listened to it carefully, that they could make out where I was wrong and what I could have improved. कुछ अच्छी लाइंस बोल सकती थी. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा लास्ट एपिसोड ऑन मदर्स नहीं सुना है तो प्लीज़ guys go and check on like both YouTube, Spotify and all other social media platforms wherein I have my podcast episodes. So here I am, and I'm sure every parent will relate with me for today's topic, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक की जिसकी वजह से हमारी आने वाली जनरेशन्स हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लाइक इन अ गुड एंड अ बैड वे टुगेदर. येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया. अब आज का सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है सभी की लाइफ का. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं. हम लोग आराम से काम करके मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक 2-3 घंटे तो ईजिली स्पेंड कर ही लेते हैं. और अगर हम किसी भी चीज़ पे इतना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट उसका कहीं ना कहीं असर हमारे पे हो रहा है. शायद हमने नोटिस किया है या नहीं किया है, दैट्स टोटली डिफरेंट, बट येस, असर तो हो रहा है. एंड सोशल मीडिया की वजह से हमारे पे और स्पेशली बच्चों की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. So we can't only blame the online classes and like 24/7 they are sticking onto their either laptops or tabs just because they have their online schooling and all. No, it's not the only thing, dear. There are social media platforms which are actually very attractive, that kids are spending more time on social media than anything else. And when they see someone on vacation or buying the latest equipments, latest gadgets, I talk about mobile phone, they begin to compare their lives. हमेशा यही होता है ना, हम लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई कहीं घूमने गया, वहाँ की पिक्चर्स अपलोड करी और हम कहते हैं वाओ सो लकी, नो आई विश आई कुड हैव ऑल्सो बीन देयर, आई कुड हैव ऑल्सो गॉन ऑन वेकेशन विद माई फैमिली. और स्पेशली बच्चों को ये चीज़ सही और गलत बताना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज especially if I talk about teenage kids, like I have teenage kids, so that's why most of the times I talk about them only. So what happens is that they get so much involved in these things that they begin to always compare their lives. उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो पाता कि वो छोटी सी एज से ही काफ़ी इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को लेके. अब सोशल एंग्जाइटी, fear of missing out and losing individuality is what social media has given to them. क्योंकि
अगर ये चीज़ मेरे फ्रेंड के पास है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड टू आवर किड्स नाउ. हर वक्त कंपैरिजन. इट्स लेस अबाउट सोशलाइजिंग नाउ. सोशल मीडिया आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे शायद सिर्फ लोग अपना इट हैज़ बिकम अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ वैलिडेशन फॉर मैनी पीपल. बस अपनी घूमने फिरने की फ़ोटोग्राफ्स लगाओ, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करो, या फिर अच्छा अच्छा खाना, अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में बताओ, अच्छे न्यू गैजेट्स के बारे में बताओ. सो दैट्स द ओनली थिंग आई गेस. बट येस, लाइक every coin has two sides. Social media, despite affecting the mental health of the younger generation, it's a great thing, when used wisely. अगर हम चाहें तो उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठा सकते हैं. और जो 2 से 3 घंटे हम लोग वेस्ट करते हैं, गेटिंग टू नो अदर पीपल्स लाइफ, वेयर दे हैड बीन, व्हाट दे हैव ईटन, बॉलीवुड स्टार्स एंड हॉलीवुड स्टार्स, एंड we follow them, and what is the latest trend and all. It's better if we use that productively. अगर हम उस स्क्रीन टाइम को कुछ प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट करें, so that will be a boon to us. अब सोशल मीडिया पे बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट भी होता है. Like I tell you one example, what happened. See, I think मैंने पहले भी ये बताया, I'm not that good in maths, right? So when my son, who's in 10th standard, I gave him a random test, okay, fine, because I wanted him to perform well in the exam. So I just told him that, okay, fine, I'll just take your test, and don't think कि मुझे नहीं आता है, just do this exercise and I'll just check it. अब obvious सी बात है, I don't remember 10th standard का maths. So I went on YouTube and other social media platforms wherein I could actually learn how to solve that particular maths problem. एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगा, इफ़ यूज्ड वाइजली, अगर इसी सोशल मीडिया को हम वाइजली कंज्यूम किया जाए, सो देयर इज़ नो नीड टू पे टू लर्न अ स्किल. दिस कंटेंट कैन बी यूज टू डेवलप स्किल्स एंड लर्न समथिंग न्यू. बहुत बार होता है लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट फीमेल्स, हम लोग को मेकअप की स्किल्स इससे पता चलती है, या फिर हम लोग कुकिंग का कुछ नया ट्राई करना होता है. देन ऑल्सो वी एंड अप सर्चिंग ऑन गूगल, एंड देन इट शोज़ देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल, उसमें आप ये पर्टिकुलर रेसिपी देखिए. एंड वी कैन ऑलवेज लर्न अ लैंग्वेज, अप स्किल एंड एवरीथिंग एल्स यू कैन थिंक ऑफ. अगर आपको कुछ सीखने का मन है, आपको उसकी पूरी नॉलेज फ्री में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी. सो इट्स नॉट दैट इफ आई से दैट आई डोंट नो एनीथिंग, इट मीन्स दैट देयर माइट बी सो मेनी थिंग्स विच आई डोंट नो, बट देयर इज अ लैक ऑफ learning also, no? If I want to know about something, I can always Google, and I can always go on YouTube and check out what is it. And it's a guarantee that we'll get something or the other on the internet or any other social media platform. So I can't stress enough the fact that people are giving away knowledge for free, and we're not even trying to learn. There's so many things, हम easily सीख सकते हैं, but it's not social media that is at fault. It's us. This is one of the best things that happened to us in terms of knowledge and value, But ये पूरा हमारे पे ही डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, when I sit with my kids, they tell me so many things, ऐसा है मम्मा, ऐसा है, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता. So when they tell me something, new to me, I feel really elated कि अच्छा लगता है कि it means that they are actually scrolling on the internet for these things too. So this is the knowledge which they are getting, despite being the fact that they are on the social media platforms and they compare their lives always, but still they are learning something or the other. चाहे वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज के सॉन्ग्स ही क्यों ना हो, या किसी डिफरेंट लैंग्वेज की तहजीब ही क्यों ना हो. इट्स रियली वंडरफुल व्हेन दे टेल यू समथिंग न्यू. एंड आई होप आफ्टर दिस एपिसोड आपको भी एक कॉन्शियस रियलाइजेशन हो गया होगा कि कैसे ये सब चीज़ें हमारी और बच्चों की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. एंड दे प्ले सच अ पाइवटल रोल इन आवर लाइफ दैट वी टेंड टू इग्नोर इट्स इम्पोर्टेंस. देखिए, हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं. और वही बात है दैट
the steering is in our hands. Like it depends on us, no, which direction we want to go. अगर हमें कॉलेज जाना है तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट, लाइक इफ़ आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, ऑफ कोर्स आई विल जस्ट सर्च अबाउट दैट ओनली एंड आई विल स्टार्ट लर्निंग ऑन दैट. सो गाइज, आप सबको कैसा लगा? आप, आई थिंक आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे. एंड अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, सो just 3 dots, there are 3 dots on this particular link. So just click on that link, share this link with all of you जिनके साथ आपको लगता है कि ये एपिसोड उनको भी सुनना चाहिए. that we are not always criticizing the social media or the internet. We agree that if used wisely, this can be a boon to all of us. So that's it for today's episode, guys. But before you skip to another episode, I would want to let you know that I'll be here again. I would, preferably on Friday, but of course, weekend पे ही मुझे लगता है that I'll be, uploading my latest episode. And I'm sure आप weekend में 10 मिनट तो मेरे लिए निकाल ही पाएंगे. Just listen to me and just let me know how do you find my episodes. And suggest me any interesting topic which you want me to discuss, which you want me to talk about. And just keep listening, keep supporting. I'll be there always. Thank you so much, guys. Thank you so much.